Just living isn't enough, said the butterfly. One must have sunshine, freedom, and a little flower. Hans Christian Andersen. This is Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. हाय 26 साल रेडियो और ऑडियो इंडस्ट्री में 6 साल से अपना पॉडकास्ट होस्ट कर रही हूँ हिंदी रेट्रो फिल्मी गीतों के बारे में, और फिर भी आज मैं एक गिगली टीनेजर जैसी नर्वस और एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसको शुरू करने का दिल मेरा पिछले 1 साल से था। और इस पॉडकास्ट के पीछे किसी बड़ी कंपनी का हाथ नहीं, किसी स्पॉन्सर का साथ नहीं, बस मैं हूँ। मेरे दोस्त गोरकी का GMAX स्टूडियोज है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गोरकी एंड GMAX स्टूडियोज। मेरे 3 फैंटास्टिक एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। एक बहुत ही टैलेंटेड ऑडियो डिजाइनर है इंद्रनील, और अब आप भी हैं। हाय, मैं हूँ रिया और ये है माइंड बॉडी मनी का सबसे पहला एपिसोड। You're listening to Mind, Body, Money with Riya. तो क्या है फिर माइंड बॉडी मनी? It's a simple, hard-working, no-nonsense podcast for women looking at independence from the outside. मतलब जैसे आप कोई छोटे बच्चे हों और दिवाली के दिन किसी बड़ी दुकान की खिड़की के अंदर झांक रहे हों बाहर सड़क से कि हाय क्या कमाल की चीजें हैं, मुझे कब मिलेंगी, जिद ला दो पापा। पर आजादी, खासकर अपनी आजादी, अपनी जिंदगी जीने की आजादी, न मिठाई है न खिलौना जो कोई खरीद के थमा दे हाथ में। सच में आजाद होने के लिए 3 चीजें हैं जरूरी: मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, यानी माइंड, बॉडी, मनी। इन 3 पहलुओं में जिसने सेहत और आजादी पा ली वो सच में आजाद है। And that is why you probably find the men around you more free than you women ever could be. Because historically, they and the world around them, socialization, mummiyan वगैरह, everybody around has always focused on their mental, physical and financial well-being. अब ये कोई एंग्री फेमिनिस्ट वाली बात नहीं है। आप खड़े होकर मुझसे लड़ना शुरू मत करिए। मुझे पता है मर्द भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, पर आप खुद ही सोच कर देखिए ना। मैं नहीं कह रही आदमियों के लिए ये आसान है, मैं बस कह रही हूं इस पर तवज्जो देना आम है आदमियों के लिए। मर्दों की तो ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि मन खुश, शरीर तंदुरुस्त और लड़का कमा होना चाहिए, है कि नहीं? सोचते तो हो ना आप कम से कम इसके बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में। आप भी सोचते हो, आपके घर वाले भी सोचते हैं। तो फिर हम लड़कियों को क्या पापड़ बेलने चाहिए यही 3 चीजें हासिल करने के लिए? ये पॉडकास्ट उसी के बारे में है। और हर हफ्ते मैं एक अलग, जिसको मैं वुमन ऑफ इंटरेस्ट कह रही हूँ। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना क्राइम थ्रिलर्स में, वैसे ही वुमन ऑफ इंटरेस्ट की जिंदगी के बारे में हम मिलकर जानेंगे। और उसकी चाहे उम्र कुछ भी हो, वजन कुछ भी, काम कुछ भी, कमाई कुछ भी या ना भी हो, हम आपको ये दिखा देंगे कि अपनी मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस पर कोई भी, एब्सोल्युटली कोई भी लड़की या औरत कभी भी फोकस कर सकती है अगर वो मन बना ले तो। और हाँ, आपको सलाह, राय और सुझाव मैं नहीं बल्कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स देंगे। आफ्टर ऑल हु एम आई? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, मुझे क्या पता आप मेरी क्यों सुनेंगे। पर मैं ऐसे लोगों से बात करूंगी जिससे आपको पता हो कि उनकी कही बात पर अमल करना अक्लमंदी का काम होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट एक्सपर्ट। आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगी अनिंदिता। हाय रिया, इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए, अब मैं खुद ही स्ट्रेस और प्रेशर में चली गई हूँ। मानसिक संतुलन खुद का ही कायम रखते हुए कोशिश करूंगी कि पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करें
जिससे दूसरों को भी help हो. Although I hate advising because advising for me, what advice works might not work for you. But I think this podcast is about that. We are trying to tailor make it and bespoke it with very specific examples. Yeah. But कोशिश यही रहेगी that whatever I am trained in and whatever I've learned, I go ahead and give it out to the world through you. और ये तो मतलब you're trained in. I want to hear a little more about that journey, because an entire 2-decade career in mainstream pop culture media, and suddenly to chuck it all up to focus on mental health. Tell us a little about that. What happened there? I think what happens is that everything that happens to us has a personal story. At least I believe that any change in our life, any big change has to have a personal story. And I think 2018 was when I went through a long period of what the doctors called as dysthymia, which is a long period of depression. And I speak about it everywhere. I'm not ashamed of it. And I think that's where my journey started. And although I was working in mainstream media with a very big conglomerate, and they are great employers, they kept me very well. But somewhere something shifted inside. And although I carried on for the next 2 years and doing my job in media, I knew that my next career has to be in something which comes through the way of my lived experience. And that's how mental health happened. I went and got another degree in psychology. I trained myself up. And you already had a degree in psychology, hai na? Yes, I also had a degree in communication. But what I did is, I hadn't studied for 15 years, Riya. My last master's in the UK, उसके बाद पढ़ाई कहाँ होती है? बस नौकरी करते रहते हैं हम लोग. और एक के बाद एक प्रमोशन लेते रहते हैं. बट सच में टू बी फेयर, प्रमोट कुछ नहीं होता है. हाँ, मतलब अंदर का कहाँ काम होता है? हम what are we inputting? I don't know. We are doing the output. So वहां से journey शुरू, like when you ask me what happened, that happened. I think the pivot was my lived experience. And then I somehow, as life would have it, got surrounded by a lot of people who work in the mental health community. And I got great supervisors, and I got professors, I got coaches who trained me. And then it happened, I guess. And then one fine day, I just got up and said, okay, thank you very much for this beautiful media career of mine. Very thankful to all the stakeholders, but I am bowing out and starting as a rookie from the very beginning at the bottom of it and going to build again. Wow, amazing, amazing, fantastic. और ये इस वक्त हमारे सुनने वालों को बताना जरूरी है कि किसी न किसी तरीके से हम सब का ये लिव्ड एक्सपीरियंस है. हम किसी टीले पे खड़े होके ज्ञान देने वाले नहीं हैं. हम सब ने अपना मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अपने देखे हैं. मैंने तो सब देखा है. मेंटल स्ट्रगल देखा है. आई हैव बीन टू थेरेपी, आई हैव बीन ऑन मेडिकेशन. फिटनेस हैज ऑलवेज बीन अ पर्सनल passion of mine. I have always worked out since I was a teenager, and that has helped me battle a lot of chronic ailments like endometriosis, gastroenteritis, etc. तो इसीलिए मेरा तो when I say fitness, I really mean fitness and not पतला होना. क्योंकि वो मेरे लिए मतलब if I've had a really functional life and a stable and a good career, it's because of the effort I've put in. Because अंदरूनी तौर से तो खोखली पैदा हुई थी मैं. और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो हम सब ने कभी ना कभी देखे ही हैं. कभी उतरता है, कभी चढ़ता है. पैंडेमिक के टाइम तो सबका बैंक बैलेंस डिप हो गया था. एंड सो देयरफॉर आई थिंक as we talk to Ankita and Ritu also, we will discover that हम यहाँ पे कोई मतलब we've got it all worked out. हमारे सर पे सींग है और हमारे पीछे हेलो है और हम सब को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए तैयार हमारी दूसरी एक्सपर्ट है अंकिता, तो उनकी अपनी भी कोई जर्नी रही होगी. हाय अंकिता. Hi. Yeah. My journey has been, well, not very long, not very experienced, but out of the little person that I am today, my experience in movement has started when I was a child. मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ. And I have been a professional dancer. I wanted to take dance as a movement, as a fitness, and as a passion, of course. But unfortunately, later on in my life, around when I was 2023, I had to leave it. Oh, okay. I met with an accident. Oh, I met with a very, very, very bad accident. And काफी सारे लोगों के साथ होता है when they, they want to pursue a certain kind of sport. Let's say, for instance, lots of men I meet, lots of women I meet, play badminton, play squash, or really like swimming. For some reason or the other, maybe financial, maybe physical,
maybe mental, maybe a situation, circumstantially, जिससे वो pursue नहीं कर पाते. And that can really put you down, make you feel like जो मेरी life की trajectory थी वो मैं नहीं कर सकती अभी, और या वो नहीं कर सकता, तो अभी हम क्या करें? Right. But for me, the only thing that healed me through my illness, through my injuries, which were very grief. I had mental illnesses, I had post-traumatic stress disorder, I had spinal injuries, hip injuries. Oh my God. And for someone who is an athlete to suddenly go from extreme movement to not being able to move, not being able to work, it's a big shake in life. And like Anindita was also saying, there are some things that just happen to you that pivot your life completely, right? So that was my pivoting point. And I took movement to teach movement, to share whatever knowledge that I could Wow. with anybody and everybody that I could do. क्या बात So है. that's my journey, and that's what I want to do. Fantastic, fantastic, wonderful. And of course, brings us to our favorite panelist. Whoever said money can't buy you happiness, जाहिर सी बात है कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, है ना? रितु से पूछते हैं. Hi रितु. Hi. It's true, money can't buy you happiness. You need the other things. So which is why on this Riya, you have three of us, because I think all of that is needed, really. You know, health, mental health, physical health, all of that is needed for otherwise your money will only be buying you that and nothing more. So if you really want to live life well, then the money needs to be used for other things other than just the health. So that needs to be taken care of. पर ये भी सच है कि पैसे का ना होना बहुत स्ट्रेन देता है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन देता है, फिजिकली यू कैन कीप योरसेल्फ कंफर्टेबल. तो ये जरूरी है कि हम फलसफे के अंदर खोकर ये ना भूल जाएं कि जिंदगी की कुछ प्रैक्टिकल जरूरतें भी हैं. Most definitely, and money is definitely a practical जरूरत. And अगर हमें pandemic ने एक चीज जो बहुत ज्यादा along with actually the mental and physical health, the one thing that got impacted hugely in the pandemic was loss of employment, loss of income for people who were self-employed. So एक और चीज जो बहुत ज्यादा उभर के आई है कि finances and financial health किसी भी इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी एनी अदर काइंड ऑफ थिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ जरूरी है. एंड फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट आई थिंक द वन थिंग इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करंट कि हमने कमाना है एंड वो आज की जरूरत है. What came out hugely in the pandemic is that हमें planning की ज़रूरत है, not just financially earn करने की ज़रूरत है, because earn तो कर लेते हैं लोग, कुछ ना कुछ, कभी ज़्यादा, कभी कम increment, कभी ज़्यादा increment, कभी कुछ salary, तो earn कर लेते हैं, लेकिन उसको ठीक तरह से जोड़ और संभाल के नहीं कर पाते हैं कि अगर बुरा वक्त आए तो वो हमारे पैसे काम आ जाए तो क्या होगा. That's right. So I think that is a lot of planning, and that is true. Maintaining your financial health is more about keeping that cushion for your current times and also times that you'll not be earning, because all of us शायद कभी ना कभी तो रिटायर होंगे. बिल्कुल. कभी ना कभी तो boots hang up करेंगे और बोलेंगे हो हर रोज मन करता है. So तब के लिए भी पैसे चाहिए. जी. But Ritu, what about, I mean, how did you, is this a finances and is this a family interest? How did you get into this line of work? You were saying you were a conservative youngster, you were saving early, right? Yes, I was saving early. I think this has my mindset probably has roots in my roots, which were basically in a small town. And I came to study in Delhi to do my graduation. And at that point in time, it just seemed like a big world. And you were an outsider. And हर चीज के लिए उस समय ऐसा लगता था कि काश की एक घर दिल्ली में हो, काश की ये amenities दिल्ली में हो, because all of those people who I was with had all of that which I did not have. Right. So it just seemed like, so I think that became the trigger कि जब से कमाना शुरू किया तब से सेव करना शुरू किया, और तब से उसके बाद फिर it's just been a journey, because the profession I followed was
after completing my education, which was in finance, I stayed in the broking and banking environment, and I followed this profession of financial planning. Wow. Hmm. So, along with having empowered myself, I think I take great pleasure in empowering That's others. wonderful. You've empowered me. I know this for a fact. मुझे हमारी एक कॉन्वर्सेशन याद है जब आपने कहा था कि विल यू हेल्प मी रिटायर, कैन आई क्विट माय फुल टाइम जॉब एंड विल यू टेक केयर दैट आई गेट द मनी दैट आई एम यूज्ड टू. So we've been there, right, for so many years now. Yeah, so I correct, guess, right. So, yeah. and honestly, this is, like I said, it's again a lived experience. पर जब आप financial health और planning की बात करते हो, now I would like to steer, this is our opening episode. आज हम किसी स्पेसिफिक वोमन की बात नहीं करेंगे, हम औरतों की, उनकी इंडिपेंडेंस की, उनकी इमेंसिपेशन की और उनकी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे जनरली फ्रॉम the point of view of what we have personally experienced with our friends, our colleagues, our mothers, our aunts, our cousins, our neighbors. और हमारा रवैया क्या रहा है उसकी ओर कि हम अपनी वेलबींग पे कितना ध्यान देते हैं और कितना कम ध्यान देते हैं. ये निरूपा रॉय मेंटालिटी और सीता माता मेंटालिटी क्यों है हम में कि सफर करते जाना ही बहुत अच्छी बात है और उसको मतलब झेलते जाना, कुड़ते जाना क्यों अच्छी बात. Not all of us are goddesses. We do not have the resilience that the goddesses had, and we are mere mortals. We need to focus on our well-being. Or ये financial, for example, well-being. As a friend of mine once said, she said, मुझे बहुत सालों के कमाई के बाद पता चला कि financial independence कमाने से नहीं आती. मुझे पता नहीं है मेरे पैसे कहाँ जाते हैं. क्योंकि कोई पापा है, कोई भाई है, कोई कजन है, कोई पति है जो उस पैसे का कुछ कर देता है. Absolutely. तो कमा के छोड़ दिया और वो कोई और उस पैसे का कुछ कर रहा है और आपका पोर्टफोलियो भी आप नहीं बना रहे, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आप नहीं कर रहे, आपको पता नहीं आप टैक्स में कितना दे रहे हो बिकॉज कोई एक आदमी तैनात है ये सब करने के लिए. दैट्स नॉट रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इज इट? No, it isn't. Financial independence really involves not just earning. I always say this, not just about earning the money. It's about managing that money and managing the finance. And also, I think, if there is one woman who gets empowered in the family to do that, if the lady of the house or the woman, it's really empowering the tribe. Absolutely. With that, because so that is a big thing about financial empowerment. All those ladies that I meet who are empowered, their children and their family and their girls after that are empowered. So it's really like, it's the tribe that gets empowered with financial, especially financial. I think I am not such an expert on any other topic to talk about, but financial independence, if a woman gets, she then, I think it applies across the board, right? If you see your mother's into fitness. I agree. है ना Ankita? What do you feel? Why do women in India not work out? Why do they not exercise enough? घर का काम इतना करती हैं. एक जमाने में हमारी माएं, they had like athletes bodies because वो झुक झुक के पोछा करना is the best. Haunches and ab exercise. और वो ऐसे उठा उठा के कपड़े डालना, मतलब bicep tricep सब उनका बना हुआ होता था. But exercising for the sake of exercise क्यों नहीं करती हैं हम? The thing is, it's very interesting that you talk about mothers because आप अगर notice करो आपके friends, colleagues or the other women that you know, if any mothers have ever been dancers, let's say for instance, traditional dance, Hindustani classical, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, हाँ, anything, कथक, कुछ भी, बड़ा थोड़ा ही किया हो, वो अपनी बेटियों को जरूर डांसर बनाए. कुछ ना कुछ तो at least little bit here and there. या संगीत किया हो, any kind of art for that matter, anything extracurricular. I know women, elderly women who are running marathons, who are avid swimmers. They make sure their children, whether they are boys or whether they are girls, are doing something or the other. तो ये आपकी माँ से इतना आता है, मुझ में आया है मेरी माँ से. My mother used to be a dancer, so I am a dancer. My nanny used to be a dancer, so I'm a dancer. So I think that is a huge aspect. One, it's very difficult for people to start doing something that has not come from your parents. But when you learn all of that in school, nowadays, with most women, middle-aged women, young or elderly, this whole pressure of earning money, taking care of children, बच्चों को स्कूल लेके जाना, इतनी सारी चीजें होती हैं दिन में करने के लिए कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता.
That is the first excuse that we all as trainers get कि time ही नहीं है exercise करने के लिए, time नहीं है exercise करने के लिए, और वो बहाना बन जाता है. Of course. Because there is a certain क्योंकि stigma वो आधे attached घंटे के to सीरियल का टाइम तो this निकल is आता the है. there is also this stigma attached to this is the only thing that says this is exercise. Or if you sweat it out in the gym 1 घंटे के लिए, you burn 1000 calories, you burn 600 calories, only that is exercise. Whereas if you really think about it, just think by yourself, आपको मजा किस चीज में आता है? You can go for a walk. You can easily do 5, 6, maybe 3 kilometers nicely, fast walking, and that's fun for you. That is also exercise. Climbing stairs, if you stay 2 floors above, 3 floors above, that's also a form of exercise. A few smaller things also count in movement, in making you feel nice physically. You don't have to always go to a gym or to an exercise class. मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारा जो एक स्ट्रीट लाइफ जो है, which is so women unfriendly in India, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि औरतें अपने घर से अपने कॉलोनी मार्केट तक जाने के लिए भी गाड़ी निकाल लेंगी, है ना? क्योंकि सड़क पे चलना is such an unpleasant experience for us यार. क्यों झेलो वो स्टेयर्स, क्यों झेलो वो कैट कॉल्स, क्यों झेलो वो पॉट होल्स? क्लियर ओपन साइडवॉक्स है नहीं, लड़के ताड़ते हैं, कोई कमेंट पास करता है, ऐसी मतलब स्ट्रीट लाइफ इज अ वेरी वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर वुमेन इन इंडिया. तो आप जो वो कह रहे हो ना कि चले जाओ ना मार्केट तक, तो पैदल चले जाओ और वापस आ जाओ. वो पोल्यूशन है हर शहर में, सांस तो आती नहीं है, गाड़ियां रुकती नहीं है. So I think health and well-being is also so interconnected with everything. Absolutely. पर उसके लिए हमें pandemic ने fortunately has given us one good thing, which is everybody is inspired to do a home workout. Everybody is inspired to do home workout. मुझे नहीं लगता, I don't know any other trainers who were very confident of going online and conducting an online session, क्योंकि आप देख नहीं सकते अपने clients को या जो आपके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, और वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है क्योंकि आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. बट सो मेनी पीपल, बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप सब इक्विपमेंट अवेलेबल है Amazon पे, आप योगा कर सकते हो, आप पिलाटेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, डांस कर सकते हो. So that is definitely one thing that has come about in the pandemic, which I think is amazing. That's true. And speaking of the pandemic, it has मतलब मानसिक लेवल पे तो उसका जो असर रहा है, as they say, Anindita, the whole globe will be suffering from PTSD, and there is no taking away from that. लेकिन एक मतलब क्रॉस, मैं तो 3-4 भाषाओं में बोल सकती हूँ. पंजाबी में मट्टी पा, बांग्ला में जेते दे, हरियाणवी में जान दे. What is this about us and Indians? About sweeping things under the carpet? Why? It's intergenerational, right? Rather transgenerational. We've seen in South Asian families, Indian families, brown families, and this might be triggering as I say it, childhood sexual abuse, baat mat karo. Marital problems, baat mat karo. किसी को कोई मानसिक इश्यूज हैं, बात बिल्कुल मत करो, एकदम नहीं. एंड दिस ब्रांड इमेज मैनेजमेंट कि हमारे घर में हम सब करण जौहर के फैमिलीज हैं इज सच. प्राण जाए पर टशन ना जाए. एक कुछ ब्रांड इमेज, मतलब हम सब ऐसे मार्केटिंग मैनेजर्स बन जाते हैं और अपना ब्रांड ऐसे ना लाइक ब्रांड चैटर्जी, ब्रांड मुखर्जी, ब्रांड शर्मा लेके ना हम घूमते हैं. And I think it comes from somewhere, the need to protect ourselves, because vulnerability doesn't come very easily to Indian families or South Asian families. तो हमने जो सीखा है हमने वो किया है. Till about, I think the pandemic has brought a mental health movement in itself. When you see globally, I mean, Riya, let's take cognizance of the fact and let me call out all of our collective privileges here. जहाँ पे हम लोग एक कंफर्टेबल गरम कमरे में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा टेक चलता है, हमारे फैंसी लाइट्स हैं. ऑनेस्टली द पर्सन ऑन द स्ट्रीट और अ पर्सन हु इज प्रॉब्ली इन द 3-tier सिटी, वो जब मजदूरी करता है या इवन इफ ही इज इन अ बेसिक 10,000-5,000 की नौकरी, उसके पास मेंटल हेल्थ की वोकैबुलरी नहीं है. It's still in India an urban town movement or a urban city movement. Of course. I mean, in a country where healthcare is not free, and when I say free, I mean government funded, most of it. There's no universal healthcare.
वहां पे थेरेपिस्ट अफोर्ड करना मुश्किल है. लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट. And in the sense, what I'm trying to get at is that मिट्टी पा या जेते दे या जान दे is because अगर हम नहीं करेंगे वो, we don't have the apparatus to handle it. So true. So true. It is a socio-economic issue, Riya. To be honest, few of us have got empowered enough to, go ask for help, have learned that it's okay to be vulnerable, have understood कि आपको भी जज नहीं करना है, हम भी जज नहीं करेंगे. तो ये जो सारी नई वोकैबलरी के साथ मूवमेंट आया, ये हाल फिलहाल में आया रिया, वो भी अर्बन सिटीज में. जी. आप किसी, यू स्पीक टू अ यंग पर्सन इन अ स्मॉल टाउन एंड आई मीन डेवलपिंग टाउन इन इंडिया, एंड दे विल बी टेलिंग मी, अनंतता 15,000 की नौकरी है, उसमें हम भाई को पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पापा को देते हैं घर चलाने के लिए, इनका कुछ दवाइयों में निकल जाता है. तो हमें जो भी फील हो रहा है उसको प्रोसेस करने का सिस्टम कहाँ है? एंड विद सिस्टम आई डोंट मीन द नीड or the desire to do it, but more importantly हम करें कैसे, बताइए. Resources. In fact, that brings me to the interconnectivity between Correct. And I was, our three aspects, I because was, it brings us right back to what Ritu was talking and about. I was just that, listening to Ritu and processing this ki, money, system, there are two, three aspects to it. पहली तो जागरूकता, awareness. मैं हर जगह जाके इसलिए लिव्ड एक्सपीरियंस बोलती हूँ क्योंकि शायद मेरे बोलने से अगर एक भी और औरत आके बोले कि अच्छा मुझे भी होता है, एंड इट्स ओके, मतलब मुझे होता है वो, सो कहीं पे नॉर्मलाइजिंग द कॉन्सेप्ट दैट अरे आपको डायबिटीज है, आप तो बोलते हो अरे क्या डायबिटीज है मुझे, अरे क्या कोलेस्ट्रॉल चढ़ा हुआ है मेरा बीपी तो इतना हाई, हम ऐसे दिखाते हैं ना इंडिया में, मतलब मेरा बीपी जैसे स्कोर कार्ड हो. मेरा बीपी तो क्या बताऊं, मैं बीपी की दवाई लेती हूँ. यू विल नेवर हियर वन पर्सन इन द पार्टी टेलिंग यू यार मैं ना एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हूँ, आप कभी नहीं सुनेंगे, बट मैं बीपी की दवाई लेती हूँ. इट्स लाइक आई एम सक्सेसफुल, आई टेक बीपी की दवाई. It's not funny. I mean, I know right now I'm using humor to lighten this up, but what I'm trying to say is that firstly, jagrukta. Say it aloud. I go to therapy. Say it aloud. उसमें क्या है? आप डॉक्टर के पास जाने में तो कतराते नहीं हैं. आप ब्लड टेस्ट कराने में कतराते नहीं हैं. आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं. तो उसी तरह एक तो जागरूकता और दूसरी बात है systems. Your socio-economic systems matter. Of course. Body is such. There is nothing mental and physical health. Personally, exactly. It is it's health. all it is health, right? The only thing is कि इंडिया में for a long time and till about the pandemic we only spoke of physical health. क्यों? क्योंकि वो दिखता है, वो obvious है, और उसके लिए कुछ systems हैं, मतलब मोहल्ला क्लिनिक हो गया, socio-economic circumstances में भी वो आप थोड़ा बहुत afford कर पाते हो. Mental health तो बहुत दूर की बात है जनाब. तो बहुत कुछ बातें हैं करने को, और आई थिंक आज हमने बहुत सारी बातें कर ली और बहुत मजा आएगा. थैंक यू माइंड अनिंदिता, नमस्ते, बॉडी अंकिता, एंड मनी रितु, नमस्कार, फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्पेशल न्यू पॉडकास्ट. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर जॉइनिंग अस. और अगले हफ्ते से हम एक वो एग्जाम्पल, एक वुमन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही लौटेंगे. आज तो इंट्रोडक्टरी एपिसोड था. उम्मीद है आपको इन बातों में दिलचस्पी है और आप हमें सुनेंगे. प्लीज कैच दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट माइंड बॉडी मनी आपके पसंदीदा ऐप या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर या फिर यूट्यूब पर. तो खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन झट से दबा दीजिए ताकि हर नए एपिसोड के बारे में आपको खबर मिलती रहे. शेयर दिस पॉडकास्ट with the women you know and the women you love, because we can promise you this podcast, yes, it is about women and independence, but with all the makeup off, all the theoretical gyan switched off, all the random philosophy missing, just pure hardworking simple tips that you can actually apply to your daily life, चाहे आप किसी भी age group या stage of life में हो. You can reach me on my Twitter or Insta handle at Ms. Riya Mukherjee, MSRIYA MUKHERJEE, or on my company's Insta handle, which is at RM Word Pictures. RM Word Pictures, world नहीं, word, WORD Pictures. आप हमें DM भी कर सकते हैं अगर आप उनमें से हैं जो अनिंदिता, अंकिता या रितु से राय मशवरा लेना चाहेंगी. तो and I'll see you again next week.
take loads of care, and value them. Value your mind, your body, your money. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design, Indranil Bhattacharjee.